Start. It seems to us that on the facts of this case, it is clear that there was a separate establishment at Bangalore and Mahalingam was working there. Stop. There was a number of other workmen working in this place. Stop. The order of transfer, it is true, was made in Krishnagiri at the head office, but the order was to operate on a workman working in Bangalore. Stop. In our view, the High Court was right in holding that the proper question to raise is where did the dispute arise? Stop. Ordinarily, if there is a separate establishment and the workman is working in that establishment, the dispute would arise at that place. Stop. As the High Court observed, there should clearly be some nexus between the dispute and the territory of the state and not necessarily between the territory of the state and the industry concerning which the dispute arose. Stop. This court in Indian Cable Company Limited versus its workman 1962 LEB LJ409 SC held as follows. Stop. The act contained no provision bearing on this question, which must consequently be decided on the principles governing the jurisdiction of courts to entertain actions or proceedings. Stop. Dealing with a similar questions under the provisions of the Bombay Industrial Relations Act 1946. Chagla CJ observed in Lal Bhai Trikumla Mills Limited. Stop. The law enunciated by the Supreme Court and the Bombay High Court has been reiterated by the full bench of the Patna High Court in the case of Paritosh Kumar Pal versus State of Bihar and other 7 S.S. Sandhawalia CJ posed in the areas falling within the state of Madhya Pradesh. Stop. The work of the person so appointed was controlling and supervised by the head office of the company at Bombay and they were paid their salaries by the head office. Stop. The company did not have any establishment in the state of Madhya Pradesh. Stop. The services of one salesman were terminated by an order made by the head office of the company at Bombay. Stop. The state of Madhya Pradesh referred the industrial dispute for adjudication by the industrial tribunal, which held that the government of Madhya Pradesh was not the appropriate government to make the reference. Stop. The tribunal held that the cause of action substantially arose with the state of Maharashtra. Stop. The union challenged the aforesaid decision by way of a writ petition, which was the subject matter of decision by the division bench. Stop. It was argued on behalf of the union that cause of action substantially arose within the state of Madhya Pradesh, where the medical representatives of the company were working. Stop. Thus, the contention was rejected by the division bench. Stop. After discussing the entire case law, it has been held as follows. Stop. In our opinion, the tribunal was right in concluding that the Madhya Pradesh government was not the
appropriate government for making a reference under section 101 of the Act of the Dispute regarding de Silvas termination of services. Stop. Now, Section 101 does not contain any express provision as to which is the appropriate state government for referring an industrial dispute in relation to which the state government is the appropriate government as defined in Section 2 of the Act. Stop. The definition of appropriate government given in section 2 is also not very helpful for determining the appropriate state government. Stop. But section 101 does contemplate that the appropriate government would be that government in whose jurisdiction the industrial dispute arise or is apprehended. When it says that where the appropriate government is of opinion that any industrial dispute exists or is apprehended, it may at any time by order in writing make a reference to the definitions of employer and workman given in section 2 show that an industrial dispute arises where the industry exists. हाय स्टूडेंट, डिक्टेशन लिखने के बाद उसको टाइप करने का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताते हैं। जैसे आप इसमें डिक्टेशन लिख लेते हैं तो इस विंडो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको इस टाइप से विंडो नजर आएगी। इसमें विंडो के राइट साइड पे स्किप टू ट्रांसक्राइब वाली ऑप्शंस आपको नजर आ रही है, इस पे क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको लॉगिन वाला विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें लॉगिन नहीं करना है, साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट आ जाएगा। क्रिएट अकाउंट में आपने फुल नेम, ईमेल, ईमेल आप अपनी सही ईमेल डालिए, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद क्रिएट अकाउंट कर दीजिए। उसके बाद आपकी ईमेल पर वेरीफाई योर ईमेल उसका लिंक ओपन हो जाएगा। इस पे आप जाके क्लिक करें। क्लिक करते ही तो कंटिन्यू की ऑप्शन आ जाएगी। कंटिन्यू पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाली ऑप्शन आती है, इस पे साइन इन करना है आपको। साइन इन करने के बाद ट्रांसक्राइब हियर वाला विंडो ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे टाइमर है, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप टाइम से पहले टाइप कर लेते हैं तो नीचे ऑप्शन है सबमिट अटेम्प्ट, उस पर क्लिक करो, अदरवाइज ये ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट करने के बाद आपको सबसे पहले एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेसी से आपने टाइप किया। नेक्स्ट विंडो है फुल मिस्टेक, कितनी मिस्टेक आपने की, हाफ मिस्टेक्स कितनी है और एरर टोटल कितने हैं और कितने वर्ड आपने टाइप किए। और नीचे आपको ग्रीन में दिखा रहा है, ग्रीन ये जो करेक्ट वर्ड है, रेड वाला जो है आपकी मिस्टेक है। इसके बाद नीचे एरर ब्रेकडाउन वाली ऑप्शन आती है, इसमें आपको सारा डिक्टेशन के बारे में बता रहा है। ओमिट वर्ड्स, मिसिंग वर्ड्स, एडिट वर्ड्स, सब्स्टिट्यूट वर्ड, ये सब दिखाता है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस है व्यू लीडर बोर्ड की। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपको डिक्टेशंस योर परफॉर्मेंस की ऑप्शन दिखाता है, आपका कितना रैंक है और एक्यूरेसी कितनी है। ये जितने भी बच्चों ने इसको टाइप किया वो उनमें आपका रैंक डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद हमारे पास व्यू ट्रांसक्रिप्ट पीडीएफ की ऑप्शंस है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको विद शॉर्ट एंड मैटर जो डिक्टेशन का मैटर है वो आपको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपने डिक्टेशन है इसमें अटेम्प्ट किए हैं उसका विद ग्राफ आपको डिस्प्ले करेगा। थैंक यू।